A demonstration going to be out here. Are these all the people? Yeah? Okay, so my name is Daniel, and for a couple of minutes I will tell you a little story about the clocks that are made here in the Black Forest. And welcome. So I will start with the very first generation of clocks who are made here in the Black Forest. Is this one. You can see that it's all made by wood with only 3 gears inside, who are powered by a stone. The stone is going down, and this is how it's working the mechanism. It has only one hand, so it shows only the time, the hours and not the minutes. It's made by 2 local farmers in the winter. So they didn't have anything else to do, so they made a clock. So, the next generation of clocks were made is this one. This one is called the shield clock because it has this big face, and the people started to paint the clocks because they wanted to have some decoration on it. Different clocks have different decorations, like flowers, like animals, all kinds of types. But the interesting part here is that we have the cuckoo. This is the first clock with the cuckoo. The cuckoo will come out as many times as the time will be. Like 2 o'clock will be 2 times, 3 o'clock 3 times, and so on. Another interesting clock at that time is this one. You can see that there isn't any cuckoo inside, but it's something else. This one we call the mother-in-law clock. Yeah, you can see the worker just doing his jobs, and at the back of him is his wife to encourage him to work harder and faster. I think it's the same in India. Am I right? Yeah. Okay. So about 100 years later, the people started to get even more creative at the time. They started to carve the clocks in different types, like this one. This one is the railway station clock. It has the design of the station clock, station houses at that time, so that's why it has these patterns who look like the railway tracks. It also has the cuckoo again, and the mechanism. So about the mechanism, which is made by brass and stainless steel, just like this one, and it's powered by weights, 2 little weights like these. Whenever the weight is going down, let's keep the clock running, and then you have to wind it again just to keep it running again. So different clocks have different types of weights, like this one. This one is a bigger weight. So with this, the clock will be running 8 days, and with the small one will be only 1 day, and then you have to wind it again. So to make the clock complete, the people started to decorate it different ways. Like this, which has also a front face, the house itself, and a little decoration on top. These were the most traditional for that time, and still are as one of the best, just to keep it more simple, a traditional. Some of the clocks also have a music box inside and movements. I'll show you one which is
with music. So, and if you're wondering, okay, it's a big song. You'll get the cuckoo. And it has the sound like a baby cuckoo. With a more deeper sound. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं जर्मनी में हूँ अभी। ये डिफरेंट टाइप के क्लॉक्स दिखा रही हूँ मैं आपको। इतनी खूबसूरत क्लॉक्स हैं, वॉल क्लॉक बहुत ही बढ़िया। ये यहाँ पे ही सिर्फ मिलती है, जो इंडिया में भी जो मिलती है ना, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है एक्चुअली। ये कुकू वाली क्लॉक जो रहती है ना, बहुत सारी क्लॉक्स अभी तो वहाँ इतना है नहीं, हमारे यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा नहीं रहती है, बहुत लिमिटेड रहती है, पर यहाँ इसका बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चर है। एक खूबसूरती से ये लोग, ये लकड़ी की सब कारीगरी है, इसी में ये बनाते हैं क्लॉक को। देखिए, हम लोग के यहाँ पे कोई चीज़ का एक्चुअली में यूज़ इतनी अच्छी तरह होता नहीं, लेकिन बाहर जब देखते हैं लोगों को, इतनी खूबसूरती से इन्होंने सजा रखा है क्लॉक से, कितनी प्यारी प्यारी क्लॉक है। ये वीडियो मैं अपनी व्यूअर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए शूट कर रही हूँ, आप लोग भी देखिए। अगर कोई नए व्यूअर्स हैं तो एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया फ्रेंड्स मेरे चैनल देखने के लिए। इतनी सारी क्लॉक्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज। देखिए, आपको भी ये वीडियो अपने व्यूअर्स के लिए शूट किया है मैंने। मैं ओरिजिनल यहाँ पे ना तो गई हूँ, तो मैं देख रही हूँ। मैंने सोचा एक छोटा वीडियो आप लोग के लिए शूट करूँ, आप लोग भी देखिए। इसी का एक वर्जन मेरे घर पे भी है ऑलरेडी, बट ये तो बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट है। आप लोग देखिए, अगर नए व्यूअर्स हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया मेरे चैनल को देखने के लिए। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों को मज़ा आएगा देखिए। इतना सारा इसका मतलब वर्जन है, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग के इंडिया में एक लिमिटेड और कुछ ही पीस वैसे आते हैं, और बहुत कम रहते हैं इसमें, ना के बराबर। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे जब देखते हैं, ओरिजिनल जहाँ बनती है, जहाँ मैन्युफैक्चर होता है, जिसका यही ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। जैसे इसने बताया कि इंडिया में ये मुंबई में, बेंगलोर में ये लोग सप्लाई करते हैं बहुत सारा। तो मैंने सोचा ये एकदम एंटीक और एकदम डिफरेंट क्वालिटी है, तो अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊं मैं। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देख के, शायद आप लोग को भी अच्छा लगेगा। No problem. ये गाइड है यहाँ पे, जिसने जो मैन्युफैक्चर यहाँ पे करता है, सेल्स बॉय। वाह, अमेजिंग।
ब्यूटीफुल यार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे क्लॉक्स हैं। ये इसकी खास बात यह है व्यूअर्स, सब व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ कि पूरी फुल ये लकड़ी का ये लोग काम करते हैं, लकड़ी को यूज़ करते हैं। मतलब लकड़ी से इतना ज़्यादा ये लोगों का मतलब मैन्युफैक्चर होता है। यहाँ पे जैसे मकान है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, घर बने हुए हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी यूज़ होती है और ये पूरी लकड़ी की डिज़ाइन है। जबकि इंडिया से इतना लकड़ी आता है, हमारे वहाँ पे उसका इतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन बाहर एक एक रत्ती एक एक टुकड़े यूज़ किए जाते हैं और इतना खूबसूरत डिज़ाइन ये लोग देते हैं उसको। आप लोग को भी देख के शायद बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि बहुत ही एंटीक और एकदम डिफरेंट टाइप लगा, तो मैंने सोचा कि मेरे सभी व्यूअर्स के लिए मैं शूट करूँ एक वीडियो। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, एक बार शुक्रिया आप लोग का मेरा चैनल देखने के लिए। इतना ज़्यादा मटेरियल है, मतलब मैं शूट भी करूँ तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा मेरा, इसीलिए मैं कुछ चीज़ें आपको शूट करके दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत ही बड़ा है ये शॉप जहाँ मैं आई हूँ। अमेजिंग यार। फुल वॉचेस है, माय गॉड, अमेजिंग। दोस्तों आपने देखा, मैंने जो वीडियो आपको दिखा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। अगर आप लोग नए व्यूअर्स हैं तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल वॉच कीजिए, शायद आप लोग को भी अच्छा लगेगा। बहुत एकदम बेहतरीन और एकदम डिफरेंट क्वालिटी इसमें है वॉचेस की। और उसका जो मतलब मेन जो पार्ट ये था कि लकड़ी में पूरा ये मैन्युफैक्चर किया गया है और इतनी खूबसूरत डिज़ाइनें दे रखी हैं, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी लोगों का।